Less than 60 days are left for your CLAT exam, which is on 1st of December. To be precise, 59 days. दोस्तों आज के इस वीडियो में there is going to be something different. मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं बताऊंगा. मैं ये नहीं बताऊंगा कि करना कैसे है, मैं ये बताऊंगा करना क्या है. So we will dive deep into a subject. Today's subject we will take is English language, and in the series of this video we will have 5 videos coming up. So आज का पहला वीडियो है my introduction at Vanguard Legal EdTech. I am the founder. My name is Lieutenant Colonel Abhinav Navneet. I have taken premature retirement from Army and मैंने लॉ करी थी उसके बाद, और अब मैं बच्चों को अपने सक्सेस की तरफ प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उनको अपना एम अचीव करने में मदद कर रहा हूँ. एंड आई एम अ मेंटोर, बट आई हैव बीन टुडे आई एम जॉइंड बाय अ स्टूडेंट, erstwhile a student for CLAT entrance exam and now a student of NLSIU Bangalore. He's Dev Shankar. Hi Dev, welcome. Hello sir. So Dev ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सीक्रेट पता कर लिया था लास्ट ईयर, एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 12. सो 12 एक बहुत ही अच्छा रैंक है, एंड इट्स इक्वल टू, आई वुड से, फर्स्ट और 12 के बीच में हार्डली देयर इज़ एनी मार्क डिफरेंस. सो यू कैन टेक सम इनसाइट्स फ्रॉम हिम ऑल्सो टुडे. देव, I am talking to you as a mentor, as a teacher. You of course were a student and now you are a student at NLSIU Bengaluru. You can differ with me. There is no script here for this video. It's like a class. और जो कुछ भी मैं बोलूँगा, जो मैं सोचता हूँ करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अगर आपने वो नहीं किया था, you can disagree with me at any point of time. ठीक है? So with that rule, we will begin. सो आज क्या होने वाला है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम डिस्कशन करेंगे, सो वी विल सी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसी स्ट्रैटेजी करते हैं, और स्पेसिफिक कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है. इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी बट मोर अबाउट टैक्टिक्स. हम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे आज आपको. ठीक है? तो डू यू अग्री विथ मी देव व्हेन आई से दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, दिस सेक्शन, एंड द स्टार्ट टू द स्टेयर्स आर ग्रामर एंड योर वोकैब. अगर ये दोनों सीढ़ियाँ आपकी मजबूत हैं, so then your reading comprehension, which is the ultimate pillar, ultimate aim of this section, will be achieved. अगर हमारा ये दोनों चीज़ strong हो तो. Yes sir, on this point I definitely agree with you. Okay. Because grammar and vocabulary are the two main important, like the two main stepping stones, right, of you approaching reading comprehension. So reading comprehension is totally based on these two, grammar and vocabulary. Right. So हमारा ultimate, these are the 3 pillars, if I may say, of English language section. The grammar, the vocab, and finally leading on to the reading comprehension. So let's go ahead and see what does reading comprehension entail. So breaking it down further, जैसा कि मैंने बोला कि हम just बड़ी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे. वी विल होम ऑन टू द स्पेसिफिक थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन. सो आई हैव लिस्टेड आउट हियर ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो हमको पढ़ने होते हैं, देन वोकैब विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, एंड इफ वी रीड ऑल दीज in the vocab part, our vocab is going to be stronger, and in addition sorry, we will have to read the newspapers, editorials. वहाँ से कुछ वर्ड्स हमें मिलेंगे, कुछ हमें पॉलिटी रिलेटेड वर्ड्स, कुछ इकोनॉमी रिलेटेड वर्ड्स, एंड कुछ जोग्राफिकल टर्म्स ऐसे सीखने होते हैं. सो ओवरऑल वी बिल्ड अप अ वाइड वोकैबुलरी. द मेन थिंग इज़ टू रीड अ लॉट. नाउ देव, टेल मी, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो ग्रामर के अंदर आपने किस चीज़ पे फोकस किया था? So I think during my preparation I focused mainly on fundamentals, spotting the errors, and I think transformation of sentences. Right. These were the 3 important points that I focused on. And literary devices? Yeah, literary devices were also there, like personification and all. They fall under literary devices. So I think this is also one important area wherein you need to focus. Right. So जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, हम सबको टेंसेस पता है, हम सबको वॉइस पता है. सो वो सारी चीज़ें, पंक्चुएशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसके बहुत ही ब्रीफ नोट्स हम बना के अपने स्टूडेंट्स को देते हैं. और उसके अलावा इन्होंने बताया कि लिटरेरी डिवाइसेस की हमने बात की, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट में चौथा इज़ लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस आर इन द ओवरऑल गैम्बिट. अगर जैसे कोई ऑथर है, कोई बुक लिखी जा रही है, तो इट्स अ वे ऑफ नरेशन. द डिवाइसेस ही यूजेस, उसका एक छोटा पार्ट सबसेट होता है फिगर ऑफ स्पीच. जैसे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन बताया, सिमिली है, मेटाफर है, इस तरह की चीज़ें उसमें आती हैं. ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वोकैब इज़ अ प्रॉब्लम देव. मैंने देखा है कि हम इज़ देयर एनी लिमिट, जैसे हम एक डिक्शनरी खोलते हैं
thousands of words are there. Now CLAT के लिए हमें तैयारी करनी है. People say that reading comprehension के लिए वो क्या ज़रूरी है. So what do you feel? कितने सारे words हमें सीखने चाहिए? Is there a fixed number? And how should be our approach? तुम्हारा approach specifically क्या था? I think towards learning words, I think there is no fixed approach because words are uncountable, right? Your whole dictionary consists of an infinite number of words. Right. So I think the important stuff is related to your preparation, right? So you are reading passages related to economics, related to politics, related to sports. So you need to know certain terminologies and also the words that come in between. So say for example that you are reading a passage. In that passage, if you find a difficult word, underline it and go on Google or look up on your dictionary what is the meaning of the word, and in that and from that way you can learn more and more words. So that is what I used to do. ओके या और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप लॉ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं. आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं हैं, आप पीएचडी नहीं कर रहे, आप थीसिस नहीं लिख रहे, कोई डिसर्टेशन नहीं लिख रहे. सो हर एक लेवल पे एक पर्टिकुलर नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट द कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेस्टिंग यू फॉर. इट्स योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो यहाँ पे हमें देयर आर डेफिनेटली वी कैन से कि बहुत इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, बट देर इज़ अ मेथड इन मैडनेस. अगर आपने चंद एक पॉलिटी रिलेटेड टर्म्स, इट कुड बी 50 और 16 नंबर. इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स अगेन 60-70, मैक्स 100. हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल टर्म्स अगर आपने इतने कर लिए, और उसके अलावा जो ये सारे डिवाइसेस यहाँ पे जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स मेंशन्ड है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीखिए, इडियम्स फ्रेजेस सीखिए, आप माइग्रेटरी वर्ड सीखिए. जैसे माइग्रेटरी वर्ड्स के अंदर में थोड़े बहुत लीगल टर्म्स भी आ जाते हैं. जैसे आपने बोला एड नॉजियम बोला, या फिर आपने डैमनम, जैसे आपने टॉर्च में आप पढ़ते हैं वैसे कोई वर्ड आ गए, इन सीटू, डी फैक्टो, ऐसे टाइप की चीज़ें. तो ये भी पैसेजेस में कभी कभी होते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर देन यू विल फॉल्टर, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड फाइनली देन वी होम ऑन एंड लीड टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज़ आवर एम. सो लेट्स सी फॉरवर्ड. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हमने ये दो चीज़ें समझ ली कि टाइप्स ऑफ पैसेजेस एग्जाम में, चाहे वो क्लैट हो या एलिट हो या फिर स्लैट हो, कैसे आते हैं, एंड विद इन दैट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, देन हाफ द बैटल इज़ वन. ऑल दैट विल रिमेन आफ्टर दैट इज़ कि हर एक पैसेज को आप समझें, उस पैसेज में क्या टेक्निक है, हमें क्या चीज़ ढूंढनी है, एंड किस टाइप ऑफ क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है. तो ये मेन दो चीज़ें हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं द सेम रिटोरिकल एडवाइस आपको नहीं देने वाला कि आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी वोकैब होनी चाहिए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा. नो, ब्रेकिंग इट डाउन फर्दर टू द बेसिक्स, नट्स एंड बोल्ट्स. इट इज़ टाइप्स ऑफ पैसेजेस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं. दीज आर नॉट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स. हमको मदद नहीं करते हैं वो. तो सबसे पहले तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर से एक्वेंटेंस आपका नहीं है, अगर लीगल रीजनिंग में टॉर्ट्स रिलेटेड एक पैसेज दे दिया और आपने टॉर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, आपका एक्वेंटेंस नहीं है, you will not be able to home on to the right option. And comprehension therefore is not only important for English language but also for your legal and logical and everything. So therefore यहाँ पे ये सारे points हमने list out किए हैं आपके लिए. One of them, Dev, you have to tell me, जैसे ये सारी चीज़ें ऊपर की तो थ्योरी रिलेटेड हैं. लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग जो हमारा इंटरनल होता है. तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस था, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ था, और अगर हुआ था तो आपने उसको कैसे सरमाउंट किया, हाउ डिड यू कम ओवर इट? I think lack of concentration is one thing which impedes your journey in this CLAT process. I think when you're preparing for your exam, I think concentration is one of the most important things which you require apart from all the syllabus, right, and all of the things that you have learned. So there are different kinds of distractions that are available right now, but you need to keep yourself away from them, and you need to keep practicing all the stuff that is there. Say for example, you are practicing passages in English, you're practicing GK, you're practicing maths. So in that way you can stay concentrated. Like many students cannot focus on one whole paragraph. They tend to forget things. So in that case you can underline the important points and the keywords which can help you answer the questions. So that is one way wherein you can So he was talking about distractions. Now distractions could be anything. It could be your social commitments, आपके पेरेंट्स के कमिटमेंट, पेरेंट को इवेंट में जाना है, शादी है,
कोई फॉर्मल फंक्शन है जहाँ पे वो जा रहे हैं तो बच्चों को ले गए. Distractions could be your new releases, your movies. Distractions also could be, my friends, these days there are concerts happening and people want to go and attend those concerts. Coldplay coming to India. Wow, Diljit Dosanjh conference. उसका जो आपका वो हो रहा था इवेंट. सो वहाँ पे भी लोग जाना चाहते हैं. उसके अलावा सोशल मीडिया तो है ही. इट गोज़ विदाउट सेइंग, पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम, आर ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो उसको डिसेबल कीजिए अगले 2 महीनों तक, बिकॉज ये जो सारे इनपुट्स हमारे ब्रेन को हर दिन पाउंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के अंदर एक तरह की मूवमेंट शुरू करते हैं और हमारा ब्रेन फोकस नहीं रहता है. हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो बहुत ही डाइवर्टेड हैं. तो जब हम कागज़ पे पढ़ने लगेंगे तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे. ऐसा देखा गया है देव, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट से सुना है और जब मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आई ट्राई टू अटेम्प्ट दोज पेपर्स माई सेल्फ. तो 450 वर्ड्स का पैसेज है, मैं पैराग्राफ 1 से शुरू करता हूँ, वेरी नाइस, एंड देन आई गो ऑन टू सेकंड एंड थर्ड. बाय द टाइम आई कम टू द थर्ड आई हैव फॉरगॉटन व्हाट वाज देयर इन 2 and 1. सो यू विल ऑल्सो फेस दिस. आप थर्ड पैरा में आते आते आपको भूलने लग जाएगा. तो लेकिन वहाँ पे अगर आपने बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो अभी मैंने बताई वो नहीं की होगी ना, तो आपका जो ब्रेन है इट विल बी इन अ बेटर स्टेट दैन मोस्ट ऑफ द अदर्स. एग्ज़ाम के बारे में एक चीज़ है कि मैं मानता हूँ कि आजकल के टाइम में एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स आर डिस्ट्रैक्टेड. सो अगर आपने ये चीज़ कर ली तो यू हैव वन द बैटल ऑलमोस्ट एंड वेरी फ्यू थिंग्स विल बी रिमेनिंग. सो पैसेज में कैसे करना है मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, चूँकि आपने सारी थ्योरी तो बता दी, बट आई वॉन्ट टू सी इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, तो अभी पैसेजेस आएंगे, आई विल मेक यू रीड इट, आई विल टाइम यू, है ना, and then I will tell you one method which I think is good, he will tell his method, and you are, as we said in the beginning of the video, you are most welcome to disagree. Read widely and read a lot. मैंने अपने एक पुराने वीडियो में एक रीडिंग लिस्ट बताई थी, कुछ किताबों के नाम बताए थे, कुछ वेबसाइट्स जो कि आपको कंसोर्टियम ऑफ एनालिस्ट नहीं बताता है. वो आपको सैम्पल पेपर तो दे देता है, बट कौन से सोर्सेज से वो उठाकर पैसेजेस पेपर में डालता है 2024-23 में जो डाले थे, मैंने उन वेबसाइट्स का आपको लिंक दिया था और उन किताबों का नाम भी बताया था जहाँ से आए थे. तो मेरे पिछले वीडियो को देखें, यू विल कम टू नो. सो टाइप्स ऑफ पैसेजेस, डोंट हैव टू रिमेंबर देम. ये वर्बैटिम आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने टाइप्स होते हैं. दीज आर द वंस वी विल गो एंड सी ईच वन ऑफ देम. सो सबसे पहले एक्सपोजिटरी पैसेज वो होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, आपको एजुकेट किया जा रहा है, और जब ये पैसेज आपके सामने आएगा तो आपको की फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, डेटा अगर कुछ है उसमें आपको ढूंढना है कि वो कहाँ पर है. और कोई अगर रिलेशनशिप दे रहा है, कोई 2 लाइनों के बीच में कोई 2 इवेंट्स या टॉपिक्स को कोरिलेट किया जा रहा है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वो आपको ढूंढना है. सो एक्सपोजिटरी पैसेज के लिए दिस इज़ द टेक्निक, एंड हेयर इज़ वन, एंड देव आई विल नाउ गिव यू टाइम टू रीड दिस. हेयर इज़ योर पेन. जो मेथड लोग जनरली अप्लाई करते हैं, जो आपने किया, यू कैन फॉलो दैट, एंड वंस आई टेल यू टू स्टार्ट यू कैन स्टार्ट रीडिंग. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, well done. So this is 35 seconds only and these are sorry, close to how many words? 60-70 approx words. So इन्होंने 35 सेकेंड्स में इस चीज़ को किया. इन्होंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट किया. अब मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्यों किया, एंड इस पैसेज का जो एक्सपोजिटरी पैसेज है इसका मेन थीम क्या है. बिफोर दैट अ स्मॉल बेंचमार्क, आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडियल स्पीड. जैसे इन्होंने 36 सेकेंड में लगभग 70 वर्ड्स कर लिया, तो 40 to 45 सेकेंड्स में आपको 100 वर्ड्स पढ़ लेने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. बिकॉज इन्होंने आज कैमरा के सामने यूट्यूब चैनल के लिए परफॉर्म किया, तो शायद थोड़ा और स्ट्रेस में होंगे. प्रॉबेबली उन्होंने 30 सेकेंड्स में भी ये पढ़ा होता अगर एग्जाम दे रहे होते तो. सो Dev, tell me the main theme of this passage. So I think the main theme of this passage is that this passage talks about how that honeybees are a vital part of our ecosystem and how they shape it.
So these social insects, right, there are different classes amongst these. So there are worker bees, there are queen bees, there are drone mates. So the worker bees are the most abundant, and they collect the nectar and perform the basic activities that a normal honeybee does. So those bees are the worker bees, whereas there is one queen bee which lays the eggs. So it is the only fertile bee in the whole lot. So so it ensures the colony's survival. But we humans have been destroying nature since a lot of time. So the honeybee population is also declining because of that, due to pesticide use and habitat loss, as I have underlined over here. Wonderful. So basically what Dave has pointed out very correctly, the paragraph starts with honeybees being a vital part of the ecosystem. The word here is vital part, and it ends with saying that they are declining, their population is declining due to habitat loss and pesticide use. So यहाँ वहाँ पे start होता है, यहाँ पे end होता है. You know the intro part, जब आप जैसे आप मूवी देखते हैं, और conclusion कहाँ पे होता है. तो जब आप इंट्रो और कंक्लूजन को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन बिटवीन क्या है. और इन बिटवीन जैसे वर्कर बीज है, इनके ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि वर्कर बी क्या करते हैं. एंड थीम के लिए वेरी राइटली ब्रॉट आउट कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट हनी बीज as a vital part of ecosystem and their declining population. That's the theme of the passage. So thank you, Dave, very nicely done. So let's go ahead. Now coming on to argumentative passage. यहाँ पे कोई viewpoint present किया जाएगा. The author will either talk for it or against it, or maybe give his opinion on that. And यहाँ पे आपको viewpoint देखना है author का, और कैसे देखना है, based on what evidence he has presented in that paragraph. So we will see one of that, and there is an don't look there, Dave, you have to face the camera because he's attempting these for the first time on camera, and I want to see what an all India rank holder, the topper, does when he is confronted with these kind of paragraphs. So this is your pen, your time starts now. Okay, wonderful. So sorry, 31 seconds again. So one thing is clear, friends, that an all India rank holder in the top 20 does not take much time to hone down onto the keywords. And how does it happen? It happens when you have sharpened your axe over a long time. जैसे कि आपने किसी पेड़ को काटना है axe की मदद से, और अगर उसकी edges sharp नहीं है तो you will take a longer time. But if you take time to grind and make it a little sharp, the edges, then you will be able to cut that tree in a shorter time frame. So that is what you guys need to be focusing on. 59 days are left. तो अपने skills पे आपको ध्यान देना है. इन्होंने इस passage में लिखा demonized. किस चीज़ को demonize किया जा रहा है? वीडियो गेम्स को. फिर उन्होंने किया डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इन्होंने नोटिस कर लिया कि कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप फाउंड नहीं, एविडेंस ये देख रहे थे उसमें, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंटेटिव है. उसके बाद इन्होंने वायलेंट कंटेंट को हाईलाइट किया. फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और उसको लिंक किया पेरेंटल गाइडेंस से, एंड लास्ट में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. सो ही हैज़ बीन एबल टू एक्चुअली होम ऑन एंड कम डाउन टू द एक्चुअल कीवर्ड्स जो कि मिस नहीं करने चाहिए थे. सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज एज पर यू? I think, sir, the main theme of this passage is this passage talks about why and how video games are being demonized in this current era, and how they are linked to aggressive behavior, whereas study and researchers do not show the same. They show that certain movies and TV serials are also doing the same, but they are not met with the same level of criticism, right? But video games, on the other hand, have been exposed to a certain kind of bias. Right. So if we focus on responsible gaming and parental guidelines, as mentioned here, then we can have a more constructive approach towards demonizing this form of entertainment. Yeah. So the author basically is saying that rather than demonizing, you take a constructive approach, have some parental guidance. It's not bad after all. So that is what it says. Yes. Okay.
ओके, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस जो थर्ड टाइप ऑफ पैसेज हैं आपके एग्जाम में आने वाले, डिटेल्स बताया जाएगा सब्जेक्ट का, ये चूँकि डिस्क्राइब कर रहा है, यू नो, I was approaching that house and the clouds were building up in the sky and it was a very dark night, so I'm describing something, you know, a mental image इसमें आपको बनानी होती है. और जो reading strategy है, pay attention to the sensory details, sight, sound and smell, etc. Let's see an example. I won't tell you to read this because this is a very small passage. However, you can see here old bookstore, यहाँ पे sunlight slanted through dusty windows इस paragraph में. So you can actually think, imagine in your mind the sunlight slanting through the dusty windows. जब हम देखते हैं कि सूरज की किरणें आती हैं और रूम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, विंटर्स में स्पेशली मोस्टली हम देखते हैं, हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़्यादा कर पाते हैं. सो दिस इज़ अनदर टाइप्स ऑफ पैसेज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव पैसेज. अब हम नैरेटिव पे जाते हैं. एक स्टोरी, as we know the word, literal meaning of the word narration, narrative is telling a story, recounting an event. यहाँ पर आपको sequence of event को follow करना पड़ता है. So therefore you need to be very sharp and focused so that आपको sequence miss नहीं हो रहा हो. And you have to identify the main elements, the main characters and what was the setting, जो plot होता है किसी भी story में. So let's see one passage here. The air in the courtroom. So यहाँ पे क्या है, courtroom को describe किया जा रहा है. Setting यहाँ पे क्या है, courtroom की है. And sweat bedded on Michael. So Michael is one of the character. So आपने setting देख लिया, आपने character देख लिया, and then will follow a sequence of event. So this is how you are supposed to approach a narrative passage. Then we have analytical. यहाँ पे deeper layers of a topic. यहाँ पे जब हम reasoning की बात करेंगे वैसे questions आएंगे. Complex ideas, topics, phenomena को dissect किया जा रहा है. यहाँ पे आपको जो है आइडेंटिफाई द मेन थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स, इस पे फोकस करना है. एंड यहाँ पे थोड़ी सी आपको इन्फरेंस भी निकालने पड़ सकते हैं. इन्फरेंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जब हम बात करेंगे उसकी तो मैं आपको बताऊंगा. सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीप जाकर डीपर कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को डिसाइफर करना होता है. एंड हियर यू सी राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ रीशेप्ड कम्युनिकेशन. तो सोशल मीडियाज इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन कैन बी अ टाइटल ऑफ दिस पैसेज. मैंने पहला ही लाइन पढ़ा, मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, बट आई नो व्हाट इट मीन्स. और मैं लास्ट लाइन पढ़ लूँगा यहाँ पर. बाई फॉलोइंग वाइडर रेंज ऑफ वॉइसेस, रिस्पेक्टफुल डिस्कशंस, यूजर्स कैन लेवरेज सोशल मीडिया टू ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज़. तो ये कंक्लूड कर रहा है ये बोल के कि क्या होना चाहिए, बट द थीम रिमेन्स राइज ऑफ सोशल मीडिया, रीशेपिंग कम्युनिकेशन. सो वेरी फर्स्ट लाइन गिव मी अ हिंट कि इस चीज़ का पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए था. Now, type of questions, if you come to know, if you know your enemy, you will win every battle, as they say. That was a quote by somebody called Sun Tzu. So यहाँ पर आपके enemy कौन है, आपके ये 6 enemies हैं, और ये 6 enemies हैं main idea, specified direct questions, then there is implied inference question, logical structure question, tone attitude and further application. तो ये सारे आपके enemies हैं और इनसे कैसे डील करना है हम आपको बताएंगे. ओके, सो पहला जो मेन आइडिया में आएगा, तो यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं. मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया क्या है, उसी को रिवर्ट दूसरे तरीके से पूछने का तरीका. थीमेटिक हाईलाइट क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑथर प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, ये सारे ही इज आस्किंग वन एंड द सेम थिंग. मेन आइडिया. सो उसी को अलग अलग वर्ड किया गया है. क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म. योर एनिमी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एयर, स्काई एंड यू नो सी, एंड ऑल्सो फ्रॉम द लैंड एंड in any kind of form. Now, main idea question. So now you are being tested again, since this is going to be more of a practical class than a theory. So please read it, highlight, and then I will ask you the question. Your time starts now. Done? Yeah. So he has finished it at 23 seconds. Okay, please write the main idea over here of this passage.
You can read while you are writing. I'm talking about the usage of public transport and how it is an environmentally better option than the usage of private vehicles like car. Okay. Than private vehicles, just right there. Okay. Fine. So what he has written, can you read it out a little louder? Usage of public transportation and how it is an environmentally better option than private vehicles. Okay. So how he got the hint is the passage in the beginning talks about car. It says it's not the most environment friendly option. Then he sees in the third line public transportation is producing lower emissions. Then third, they have given example of a bus in the third line, and in the last line they say public transportation public often relies on electric or hybrid vehicles, further minimizing the environmental impact. So what he's brought out is usage of public transport and how it is environmentally better option or not. So let's see whether his option is correct or not, answer is correct or not. Public transportation is a more environmental friendly commuting option than cars because, so he has expounded, the answer here has expounded it further. He's not gone to explain it further, but he's on the right lines when he is homed on to public transport. You can see public transportation here. He's written environmentally. The same word environmentally is figuring here, so he was on the right lines, and if this was an option he would have definitely ticked that option, because doing it, seeing without option makes your task difficult. But once you are presented with option, by the process of elimination also, and by just seeing these two words, he would have immediately ticked on this, taking maybe less than 10-15 seconds to solve one question. Okay, then we will go on to specific details. So yahan pe you will be asked which option author is most likely to agree, disagree, or which is true or false, or it is in the context or not. So let's see. There is a passage here and there are questions here. So yahan pe Dev, quickly read, underline and give me which is the answer to question number 1. And then you have to explain to everyone to our viewers how you homed on to that answer. Very nice. So again you have taken less than 30 seconds to answer. Can you explain why have you gone for option 3? Sir, because in the first option, explain to the audience please. Yeah, so the first option you can see that it is written, so let's read the question first. Okay. So the question says that which of the following statements would the author most likely agree with. So the passage talks about two sides, which are the proponents and the opponents. So they're arguing for the reason why because why zoos are a controversial topic. So why zoos are a controversial topic? Because there have been two sides that have been created. One says that zoos are good because they protect animals, they protect endangered wildlife, whereas the other side says that zoos create an artificial environment wherein animals are cramped, and they question the well-being of animals also, as it is mentioned in the passage. And some zoos prioritize entertainment, and they do not pay attention to conservation efforts. So this is basically the main crux of the whole passage. Right. So the question asks us that which of the following statements would the author most likely agree with. So the first option is zoos are the best way to protect endangered animals, but we can see that this is only argued by one side, right. But the author talks about both the sides, right? So we don't get a very clear view about what the author is supporting, because he's giving us both the views. So I think this option would not be there. The second option says that all zoos prioritize entertainment over conservation. So the moment you see this all, so this is a very extreme word, so I just removed that. Okay. And option C says that zoos can play a role in species conservation and public education. So this is one option which is argued by the proponents over there, but it also represents one of the views of the author. So this is one of the best options. B should be removed because it is an extreme option. Zoos are the best way.
it says that it is the best way. So it is directly stating that it is the best way, but we can not see it in the passage that the author has mentioned something like that. Fine. So option C is, I think, the maybe it's correct. So what he's saying, why did he negate option 1? You have to understand that the question asks you what is he most likely. Most word has not been omitted, it has been added. The question doesn't ask you the author likely to or less likely to, it's saying most likely. So while he is also making this statement that zoos play a vital role in conservation, however, he is giving a different viewpoint by saying that they are cramped and they are artificial environments. So therefore he omitted A and further was his logic to other options also. So let us see whether he's right. Yeah, so this option C is correct, what they rightly pointed out, reflects the balanced viewpoint presented in the passage. As we know that this is the author is arguing a viewpoint, so the balanced viewpoint is being presented by only option C, and he acknowledges both the positive and negative aspects of the zoo. Okay, let's go to other passage. This is the implied idea inference. Here you need to tickle your brain a little more, and which of the following can be inferred. So they basically the details will not be given in the paragraph. It is not a direct question. You have to draw your conclusion or inference from that. So we have one big paragraph, and this will be something which we will not read right now. We have gone through a couple of passages, told you how to go about it. So let's see the questions where what can be inferred. Traditional classroom, okay, let me try to think, go over it. Which can be inferred? Traditional classroom learning, outdated, ineffective. Okay, robotics program, cost effective educational tool. Robotics program can enhance. So what can be inferred? If we go back here, you see it is talking about traditional classroom learning, and it is saying that it is exploring innovative methods. Robotics have emerged as a promising addition. The programs allow to delve into STEM concepts. Okay, by building and programming robots, students gain valuable problem solving skills. That also has been written about robotics, and furthermore robotics can foster teamwork. And the last line says, despite the clear benefits, some educators express concerns about the cost of implementing robotics program. तो cost के ऊपर बात हो गई. So once we go here, B is will B be the option? Robotics are a cost effective. No. No. Traditional classroom is outdated. No, he's not totally ruled it out. So option C will be the one. So in a very less time, as you saw, I just read it, went through the main points, and came to the conclusion that C would be the option. So I also did it in a less time. What do you feel? Yes. Yeah. So let's go to the next implied idea question. Similarly, there will be other questions. We will skip this. You can pause the video later on when you watch it again and see this. And the answers, finally, there will be a logical structure type of question which will ask you which one of the approach is used by the author to develop his argument in the passage. Okay, and then there will be a paragraph like this: sleep, we're talking about sleep and it's a physiological process. Our brains, talking about sleep and brain relation. It regulates hormone production. Deprivation can impair cognitive function. So what I am doing is I am just, by looking at it, trying to home on to the keywords, and then you will be able to answer these very easily if you have gone through the process which me and Dev have just displayed to you. And let's go ahead. Then there will be a tone or attitude. What is his approach? Is it positive, negative, critical, constructive, supporting some idea, praising some idea? So that's called the tone of the passage. And just Dev, have a look at it and we can think of answering this. Okay, I've read it. You read it. Yeah. We all, both of us, read it in 23 seconds. Question: tone of the passage. That's it. What's the tone?
I think the author is concerned. It shows a level of concern that the author is trying to portray, wherein the fast fashion industry, though it presents latest styles and other stuff. Is it a positive tone or a negative tone? It's more on the, I think it's leaning more on the negative side. Criticism? Yeah. Okay, yeah. So he's critical. Yeah. So as we have homed on, it is? What Option is the tone B. of the passage? It's B. It's B. Critical and concerned. So we were just trying to compete against each other, and both of us arrived at the same answer. So right now it's mentor 1, student 1. Okay. Yeah. So continued idea question. So let's compete on this one. Let's see whether I do it faster or he does it. It's a real live class going on. Suitable title for the passage would be. ठीक है, हमें passage का title ढूंढना है. Okay. Okay. Let's read. Time starts now. Okay. Done? Yes. Okay, 18 seconds. Done. Me also done. What can be a suitable Title. Right. I think physical playing physically outdoors is one of the most. It's like the main idea. Don't give me a line. The title would be maybe 2 to 3 words or 4 words. Yeah. Or a phrase. So physical play is important in a child's building, in a child's formative years. Just underline where do you see the physical play word. Yeah. Okay. So according to you, the title would be physical play. Yeah. And you have to utilize these 2 words also. Importance of physical play in a child's development. So that's the title. I don't think answer is given over here. Yeah, it's given over here. The options are importance of chores, power of play in child development. So option B. Dave highlighted physical play. I highlighted both. So I think 1-0. I get 1 point. You only said physical play. You didn't relate to the child's development. Yeah. Fine. So option B, power of play in child development. So we had to home on to not only physical children's but development. That development word was the central word around which all the activities are revolving, whether contributing to development or not contributing, right? Okay. And then we have fine, the power of play in child development. That's the answer. Okay, continued. We will skip this, otherwise you people will get bored and you will have to attend other classes as well. So we will try to skip few questions and go on to our conclusion. And yeah, so now right now one last point, important thing which we want to discuss is, I have say mock tests with me. Like this is one bunch of it. I have 10 odd bunches like this. How many mock tests should you attempt? And if somebody has just started last month, September end, because he was or she was giving her or his half yearly exams of school and they could not spare time, now only 59 days are left. So can he do 60 mock tests now? No. No. Because 59 days are left, or you can't do 2 in a day. It will tax your brain. How many did you do? Give me a realistic figure. How many do you recommend? Your model could be different, but let's say this much must be done. That's the basic minimum. What is the basic minimum? I think since 59 days are left for the exam, and on the last day you're not doing anything, like on 30th, it's like basically it's like 58 days now. Right. So I think you should be doing like 30 to 35 mock tests. Okay. In the meantime. Right. So in October and in November, both the months combined, we will aim at 35 mock tests. And what should be our last date of mock test? What did you do when the exam is on 1st of December? Should we be giving mock test on the 30th of November? No, I would not recommend doing that, because last year the exam was on 3rd of December, I remember. So the last test that I gave was on the 1st of December, and on 2nd of December I did not do anything related to my course. I just relaxed, and I just, I was completely tension free. And on the exam day, go and do your best. That is what I would say. Okay, so what is recommended and advised is that अगर first को आपका exam है तो 24th, 25th, 26th or maybe as late as 28th, that should be your last mock test. Leave a gap of 29th, 30th or maybe just 30th, but 1 or 2 days gap is required in which you are
relaxing and going through your concise revision notes. And once you have given CLAT exam on 1st of December, your next exam will be AILET exam, which will be on 8th of December. So from 1st to 8th, how many more mock tests, or there should be no mock tests? I think you should start giving AILET mock tests after that. So since you have your exam on 1st, don't do anything on that day. But from 2nd, I think AILET is on 8th, right? So till 6th, I think you should do mock tests daily. Right. 2nd December to 6th of December, mock test. 7th December, rest day, revision day. That means between CLAT and AILET exams, you have to give 5 mock tests. Is that right? Yeah, 4. 4 mock tests. Yeah. 2nd, 3rd, 4th, 5th. Yeah. And if you include 6th of December, Yes. that makes it 5. Yeah. So 5 mock tests we will give. Okay. So that was all our students, viewers. This was a mentor and a student fight. Initially we were at 1 each, but then I took the lead probably, but I will give it to him because of course everyone of us is camera conscious, and he was performing under pressure, under a teacher's guidance, and therefore but I'm sure that when he was giving the exam, he was far much better because he has triumphed over a lot of competition and been there. He will be there in our team at Visual EdTech. For any queries to us, please do mail us, please WhatsApp on our number given in the description below. Thank you for watching. Have fun, read well, eat well, and sleep well.